Hello students. So in the last class we discussed characteristics of equilibrium constant. Last class हम पढ़िथिलु characteristics of equilibrium constant. So next हम कहथिली I will teach you Lee Chatellier's principle. Lee Chatellier's principle, which is an interesting principle. Lee Chatellier's principle. We have discussed a lot regarding this principle. Already हम बहुत discuss कर सारिछु, but हमें theoretically एटको पढ़िबा आज. So we will learn it theoretically today. So it is applicable both for physical and chemical equilibrium, and this is mostly used to manipulate the manufacturing of products which are required in reversible reaction. Reversible reaction ने हमको जो किसी product होयर अछि, so we apply the principle of Lee Chatellier's so that the product can be maximized or the yield can be maximized. Okay. So what is Lee Chatelier principle? Koichi, if a system is in equilibrium, it wants to retain its equilibrium. So at any cost, it wants to retain its equilibrium. If we want to disturb it by any means, जब हम इसको disturb करिया, ताले कौन करिवो? से निजको एमती adjust करना हो, it will shift the equilibrium in such a direction that the effect of the change is minimized or nullified. That is Lee Chatelier principle. जदि गोटे सिस्टम इक्विलिब्रियम रे अछि से सब चाहूँ इक्विलिब्रियम रहिबो जदि हम ताको डिस्टर्ब करबा बाय एनी मींस बाय चेंज ऑफ concentration, temperature or pressure, addition of inert gases, these are the various factors, addition of catalyst, ताले कोन हबो ना किसी नॉन फैक्टर्स अछंती लाइक एडिशन ऑफ इनर्ट गैसेस एंड कैटलिस्ट जहार कौन सी इंपैक्ट नहीं व्हिच आई विल डिस्कस अगेन बट the change in reaction conditions such as change in concentration of the reactant or product, change in temperature, change in pressure will affect the equilibrium condition, will affect the equilibrium constant, the value of equilibrium constant. Then if it happens, if we want to disturb the equilibrium by any means, the system will adjust itself in such a way that the effect of the change आमे जहाँ change करथिबो सेटा minimize होइजिवो केमति करिवो ना it will change the equilibrium in such a direction that the effect is minimized or nullified. So what is the principle? When a system माने हम chemical equilibrium पाई में लिखोछु in equilibrium when a system in equilibrium is disturbed then the system adjusts itself इसको एमती एडजस्ट करना हुआ adjusts itself in such a way that the effect of the change जो चेंज हमें करिथिबो the effect of the change is minimized or nullified कमी जीव बहुतटा पूरा तो नलिफाई करि परिबोनी और नलिफाइड नल एंड वॉइड माने काउंटरएक्ट करबा को नलिफाई कह जाय हला ताले जतले गोटे सिस्टम इक्विलिब्रियम रे अछि से ताको मेंटेन करिया खोजुची आउथरे कहि दोची जदि ताको हमें बाय एनी मींस डिस्टर्ब करबो केमति डिस्टर्ब करबो बाय चेंज ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट और प्रोडक्ट बाय इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग द टेंपरेचर देन बाय इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग द प्रेशर जदि एमति हमें डिस्टर्ब करबो ताले कोन हबो ना ये निजको एमति एडजस्ट करना हबो बाय चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ द इक्विलिब्रियम इन सच ए वे दैट द इफेक्ट ऑफ द चेंज विल बी मिनिमाइज्ड. ओके, सो दैट इज ली चैटलियर प्रिंसिपल. अप्लाई करबा आगे माने करो फर्स्ट होची कंडीशन 1 change in concentration of the reactant or product. हमें the reactant बा product कहारी भी concentration change करूछु देखिबा कोन होची change in concentration of the reactant or product. Okay, so we'll take an example. Haber's process naba. Haber's process will be the main example. काहे कि ना here manufacturing of ammonia takes place. कौन manufacture करा जाए ammonia which is required for manufacturing of fertilizers.
So Haber's process नबा कौन ना N2 gas plus 3H2 gas gives rise to 2NH3 gas. So for this, what will be the equilibrium constant? K will be square of the concentration of ammonia, kind of ammonia is a product, divided by concentration of nitrogen N2 into concentration of H2 to the power 3. And तीनटा अच्छी hydrogen. So this is the equilibrium constant. Suppose we will increase the concentration of the reactant. K reactant na nitrogen and hydrogen. ताले कौन हबो? The value of equilibrium constant will decrease. कहीं कि ना एमाने अच्छे denominator रे. So आमे तले reactant concentration बढ़ाऊचु कारण ammonia बा hydrogen concentration बढ़ाऊचु when we are increasing their concentration. जो ते मान denominator अच्छंती कौन हबो? The value of equilibrium constant will decrease. किंतु सिस्टम कौन करिवो? न्यूज को एमती एडजस्ट कर दबो so that this ratio again gains constancy. आउ थे constant जेते हिजबो ताले कौन करिवो? ना तो आमे reactant concentration बढ़ाइबो से equilibrium को shift करनबो product side. Equilibrium will be shifted towards product side. That means more ammonia will be produced. एठी कोन होची एटा जेहेतु बढ़ी जाउची ammonia कम अछि equilibrium constant value टा कमी जाउची ताले कोन करियो equilibrium टा as per Le Chatelier principle will be shifted towards the product side. More product will be formed. Basic product form हेले कोन हबो ammonia concentration बढ़ी जिवो ताले कोन हबो again the equilibrium will be re-established. equilibrium आउथे re-establish हे जिवो again this value will be constant. ठीक अछि ताले आमे समराइज करबा change in concentration of the reactant and product केमति समराइज करबा ना increase in concentration of the reactants ताले कोन होची देखो जदि हम रिएक्टेंट कंसंट्रेशन बढ़ौची ताले कोन होची इक्विलिब्रियम शिफ्ट होची shifts the equilibrium कोन शिफ्ट करची ना प्रोडक्ट साइड को इक्विलिब्रियम टुवर्ड्स एरो ऊपर लिखि दबा हमें इक्विलिब्रियम टुवर्ड्स कोड नबो ना बेसिक प्रोडक्ट फॉर्म होबो तेनो प्रोडक्ट साइड को इक्विलिब्रियम शिफ्ट हे जिवो आ माने कोन ना फॉरवर्ड डायरेक्शन ता बेसी प्रिफर्ड हो फॉरवर्ड डायरेक्शन बेसी प्रिफर्ड हो माने कोन मोर प्रोडक्ट विल बी फॉर्म तेनो आमे गोटे लाइन एमती समराइज कर दबा increase in concentration of the reactant shifts the equilibrium towards product side. That means it favors the forward direction. More product will be formed and this will again regain its equilibrium condition. अच्छा जदि हमें प्रोडक्ट रा कंसंट्रेशन बढ़ाइबा जे देखो जे हमें अमोनिया कंसंट्रेशन बढ़ाउछु ताले कोन होची ना इट इंक्रीजेस द वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऊपर जेतु रहउची न्यूमरेटर रहउची ताले कोन होची ना इट इंक्रीजेस द वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ताले पुनी ताको कांस्टेंट केमति करले इक्विलिब्रियम केमति पहुंचेबा ना हियर द इक्विलिब्रियम विल बी शिफ्टेड टुवर्ड्स द बैकवर्ड डायरेक्शन. That means towards the reactant side. ताले कोन हबो ना जो अमोनिया कंसंट्रेशन बढ़ाई देलु it will favor the backward direction. ताले more nitrogen and hydrogen will be produced. ताले इक्विलिब्रियम कोड शिफ्ट हे जिवो ना रिएक्टेंट साइड को शिफ्ट हे जिवो ताले कोन हबो ना एयर कंसंट्रेशन जति बढ़ी छि सेही अनुसार इक्वली बढ़ी जिवो कोन ना नाइट्रोजन और हाइड्रोजन कंसंट्रेशन again the equilibrium will be re-established and the value of K will be constant. Okay ताले सेम कोन लिखबा increase in concentration of the products कोन करिवो छुआ कहली इक्विलिब्रियम रेसिड्यूल होबो रिशिफ्ट होबो shifts the equilibrium towards shifts the equilibrium towards को पटा नै जिवो ना बैकवर्ड डायरेक्शन को ता माने को साइड अछि बैकवर्ड रे की अछि रिएक्टेंट साइड तेनु बेसी रिएक्टेंट प्रोड्यूस हेबे तेनु shifts the equilibrium towards reactant side. That means shifts the equilibrium माने कोन ना more reactants will be formed backward direction ता बेसी preferred हो. Okay so mostly these cases are asked as examples तुमको apply करियो पड़िबो. You have to keep in mind जदि reactant रा concentration बढ़ेबा equilibrium will be shifted towards product side. That means the forward direction will be preferred, more product will be formed so that equilibrium will be again re-established. जदि
प्रोडक्ट कंसंट्रेशन बढ़ेबा बैकवर्ड डायरेक्शन को इक्विलिब्रियम शिफ्ट कर जिवो मोर रिएक्टेंट्स विल बी प्रोड्यूस्ड सो दैट इक्विलिब्रियम इज अगेन रीएस्टैब्लिश्ड ओके स्टूडेंट्स देन नेक्स्ट विल डिस्कस द चेंज effect of change in temperature. So next students will discuss the effect of change in temperature. Effect of change in temperature. So assuming that when we will increase the temperature, the heat content will increase. So I have already told you mostly the energy is expressed nowadays in terms of heat content. जदि हम temperature बढ़ाऊँ हम assume करिबो जे we are increasing the heat content, okay, of the reactant or products. Okay. So change in temperature देखिबा सही example लबा Haber's process N2 gas plus 3H2 gas gives rise to 2NH3 gas. So with respect to effect of change temperature, we have to mention we should have the idea of exothermic or endothermic reaction. Okay. So with respect to release or evolution of heat, the chemical reaction can be of two types. कहथिले already agro. So where the heat is evolved, it is called exothermic reaction. Where the heat is absorbed, it is called endothermic reaction. Okay. So mostly we express it in terms of enthalpy, change in enthalpy. So for this reaction, del H is equal to minus 92 kilojoule per mole. So minus 92 for Haber's process, the change in enthalpy is minus 92 kilojoule per mole. So when change in enthalpy del H is negative, you have to follow that it is exothermic. Heat is being evolved. ताले जानिबो जदि del H ता negative value अछि, it is exothermic. If del H is positive, it is endothermic. Second कथा मन रखिबो, the reaction which is exothermic in the forward direction, एटी फॉरवर्ड डायरेक्शन एक्सोथर्मिक होची जेतेबेले नाइट्रोजन और हाइड्रोजन कंबाइन करके अमोनिया दोचंती देन इट इज एक्सोथर्मिक हीट इज बीइंग इवॉल्वड ताले ता बैकवर्ड डायरेक्शन ता इक्वली एंडोथर्मिक हो द रिएक्शन व्हिच इज एक्सोथर्मिक इन फॉरवर्ड डायरेक्शन will be equally endothermic that means heat will be absorbed in this direction in the backward direction and vice versa मतलब backward direction ता exothermic हेतिबो ताले forward direction ता endothermic हबो It is basic principle to decide the effect of change in temperature. So we have to see the reaction is exothermic in which direction. If it is exothermic in the forward direction, that means heat is being evolved in the forward direction. Then equal amount of heat will be absorbed in the backward direction. जदि गोटे reaction टा forward direction ने exothermic होउची, ताल ता backward direction निहाती endothermic हबो. जदि गोटे reaction forward रे endothermic, backward direction टा निहाती exothermic हबो. So you have to remember this thing in mind, keep this thing in mind eta nihati tumko मन रखिया पड़े अच्छा so when we are increasing the temperature what we are doing we are increasing the enthalpy हम heat content बढ़ाउछु कहि दै starting रो we assume that we are increasing the heat content तो हम तो बाहर temperature supply करूछु heat supply करूछु temperature increase करूछु it increases the heat content अच्छा so the reaction which is producing heat if we supply heat from outside it will not receive that heat किंतु जेहेतु रिसीव हीट ता बाहर दिया होची इट वांट्स टू रिसीव इट जेमथि हेले नबा को चाहिबो तो कोन करिवो ना ये जो डायरेक्शन से हीट टा को एब्जॉर्ब करि परिवो इन द डायरेक्शन इन व्हिच इट कैन एब्जॉर्ब दैट हीट जो टेंपरेचर हम बढ़िया द्वारा जो हीट कंटेंट टा बढ़ौछु जो डायरेक्शन से ता को एब्जॉर्ब करि परिवो से डायरेक्शन को से इक्विलिब्रियम को शिफ्ट कर दबो बुझियला छुआ आ थे रिपीट करूची मानकर फॉरवर्ड डायरेक्शन में ये हीट सप्लाई करछु बिकॉज़ इट इज एक्सोथर्मिक इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन Suppose we want to increase the temperature, I mean temperature increase करू, ताले कौन हला heat content बढ़ला, increases the heat content. So when heat content is increased,
फॉरवर्ड डायरेक्शन रे हीट नहीं परिबोनी ताले कोन करिवो इट विल चेंज द इक्विलिब्रियम इनटू सच अ डायरेक्शन दैट हीट विल बी एब्जॉर्ब ताले को डायरेक्शन नै जिवो ना द बैकवर्ड डायरेक्शन और एंडोथर्मिक रिएक्शन विल बी प्रिफर्ड एटी एंडोथर्मिक रिएक्शन किए ना बैकवर्ड डायरेक्शन ओके तो केमति समराइज करबा ना इंक्रीज in temperature increase in temperature कौन करिवो ना shifts the equilibrium shifts the equilibrium कौन ना towards को पटे नबो से एक्स्ट्रा जो हीट कंटेंट बढ़ुची ना एंडोथर्मिक पटे नहीं परिवो towards endothermic side endothermic reaction सेमती डिक्रीज इन टेम्परेचर the टेम्परेचर में कम होचु कोन करबा डिक्रीज इन टेम्परेचर आमे टेम्परेचर कम हे दिलु माने हीट कंटेंट कमी गला ताले को पट इक्विलिब्रियम शिफ्ट हे जिवो towards the exothermic side फॉरवर्ड डायरेक्शन ए बाय फॉरवर्ड डायरेक्शन शिफ्ट हे जिवो ताले डिक्रीज इन टेम्परेचर shifts the equilibrium towards को पट नै जिवो टेम्परेचर डिक्रीज कला माने हीट कंटेंट कमिवो तेणु एक्सोथर्मिक पट पळे जिवो एक्सोथर्मिक साइड एक्सोथर्मिक reaction. So this is how we can summarize the effect of change in temperature. तो तुमको आइडिया क्लियरली जानिया दरकार जो the reaction is exothermic or endothermic in the forward direction. If it is exothermic in the forward direction, equally endothermic in the backward direction. जदि हम टेम्परेचर इंक्रीज करछु, if we want to increase the temperature, रिएक्शन को डायरेक्शन को पळे जो इक्विलिब्रियम को डायरेक्शन को जीवो ना एंडोथर्मिक साइड को पळे जीवो जदि टेम्परेचर डिक्रीज करछु equilibrium will be shifted towards the exothermic side. For example, तामाना we want more production of ammonia. कोन करबा ना अमोनिया जेतले देखो फॉरवर्ड डायरेक्शन रे एक्सोथर्मिक तो हम टेम्परेचर इंक्रीज करिवो तारे कोन करिवो अमोनिया ता बैकवर्ड डायरेक्शन को पळेबो माने मोर नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन विल बी प्रोड्यूस्ड तेणु हमको फॉर बेटर यील्ड और ग्रेटर यील्ड ऑफ अमोनिया कोन करियो पड़िबो ना हमको टेम्परेचर डिक्रीज करियो पड़िबो बट साइमल्टेनियसली प्रॉब्लम अछि टेम्परेचर आल्सो डिसाइड्स द रेट ऑफ रिएक्शन जदि हम टेम्परेचर को बेसी कमै दोछु ताले कोन हो रेट ऑफ द रिएक्शन विल डिक्रीज ताले कोन हो उटा मझा मझी टेम्परेचर वी हैव टू मेंटेन एन इंटरमीडिएट टेम्परेचर वेयर द प्रोडक्शन ऑफ अमोनिया विल बी मैक्सिमम दैट टेम्परेचर व्हिच इज मेंटेन्ड इज कॉल्ड ऑप्टिमम टेम्परेचर तेनु एमती तुमको क्वेश्चन आसीबो दिस इज हाउ द क्वेश्चंस आर आस्क्ड so what will be the effect of increasing temperature on this reaction you have to answer so this is the effect of change in temperature for this you should have clear cut idea regarding exothermic and endothermic और del H रो तुम्हें मन रखिथिबो साइन ता del H negative means it is exothermic if del H is positive it is endothermic okay students next we'll discuss the effect of change in pressure then students will go for effect of change in pressure point 3 effect of change in pressure जब हम प्रेशर इंक्रीज बा डिक्रीज करछु कोन हबो सो फॉर दिस यू हैव टू रिमेंबर टू थिंग्स दुटा जिंस तो मन रख पड़ियो सो फॉर केमिकल इक्विलिब्रियम द रिएक्शन इज टेकिंग प्लेस विद इन ए क्लोज्ड कंटेनर भितर गोटे क्लोज बॉक्स भितर होची रिएक्शन सो इफ यू वांट टू इंक्रीज द प्रेशर जदि हम इंक्रीज करिवो व्हाट विल हैपन सपोज हम प्रेशर टा इंक्रीज करिवो प्रेशर इंक्रीज करले वॉल्यूम विल डिक्रीज जदि प्रेशर डिक्रीज करिवो वॉल्यूम विल इंक्रीज सो व्हेन प्रेशर increases volume decreases when pressure decreases volume increases because it is taking place within a closed chamber हला तेरो जेहेतु क्लोज कंटेनर भितर रिएक्शन ता होची तुमको एटा माइंड रे रखिया पड़िबो जेतला हम प्रेशर इंक्रीज करछु कोन होची प्रेशर इंक्रीज करले वॉल्यूम डिक्रीज करिवो वी हैव ऑलरेडी read the laws gaseous laws हम पढि सारछु when pressure is increased at a constant temperature volume decreases because they are inversely proportional to each other okay सेमति प्रेशर जदि डिक्रीज करूछु वॉल्यूम विल इंक्रीज
ताले इफेक्ट ऑफ चेंज इन प्रेशर मीन्स व्हाट चेंज इन वॉल्यूम तो दुई प्रकार क्वेश्चन आसीबो आइदर इन टर्म्स ऑफ प्रेशर आसपारे बा वॉल्यूम आसपारे इंक्रीज इन वॉल्यूम माने जानिबो डिक्रीज इन प्रेशर डिक्रीज इन वॉल्यूम मीन्स इंक्रीज इन प्रेशर so that is the first thing to keep it in mind second thing is that mostly the number of moles of the gaseous reactant or product is considered कहीं कि ना हम एतर वॉल्यूम चेंज मेजर करिवु वॉल्यूम चेंज बा प्रेशर जदि मेजर करिवु मोस्टली विल कंसीडर द चेंज इन gaseous number of moles कहीं कि ना solids or liquids they don't have experience any change in volume with respect to change in pressure तेणु ताका ऊपर कौन इंपैक्ट नहीं and mostly pressure means will follow the partial pressure of the gas so जते पर्यंत वॉल्यूम टा कांस्टेंट अछि the partial pressure will be unchanged but volume जदि वेरिएबल हो गला partial pressure will change so partial pressure जेतो हम फॉलो करिवु so keep this thing in mind हमें फॉलो करिवु what the change in number of moles of the gaseous reactant or product तेणु सेकंड होची we have to follow the change in number of moles of the gaseous reactant or product सेति हमको फॉलो करेंगे पड़े फर्स्ट थिंग सो पॉइंट 1 टू बी रिमेंबर्ड with respect to volume point 2 is that when we measure or when we consider regarding effect of change in pressure हमको ए दुईटा पॉइंट मन रखियो पड़िबो इट इज मोस्टली इन टर्म्स ऑफ चेंज इन नंबर ऑफ गैसियस मोल्स ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट ए दुईटा तुमको माइंड रे रखियो पड़िबो सपोज फॉर द सेम रिएक्शंस हम आसीगलु आउ थरे होमोजेनियस आसिलु N2 गैस प्लस 3H2 गैस gives rise to 2NH3 gas our process आउ थरे आसिलु 2NH3 gas so when we speak of moles we speak of number of gaseous moles एठी केते रहला एटा गैस 1 मोल एठी रहला 3 मोल ये रहला 2 मोल ताले टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट केते गला 4 मोल प्रोडक्ट केते गला 2 मोल हला 2 मोल प्रोडक्ट साइड रहला रिएक्टेंट साइड रहला 4 मोल देखिबा एबे जदी इफ वी इंक्रीज द प्रेशर जदी प्रेशर हम इंक्रीज करूछु ता माने कोन करूछु वॉल्यूम डिक्रीज करूछु वी आर डिक्रीजिंग द वॉल्यूम ताले कोन हबो इक्विलिब्रियम विल बी डिस्टर्ब काहे की कहिची इक्विलिब्रियम is a constant the equilibrium constant is a constant until the reaction conditions are constant temperature pressure जे पर्यंत constant अछंती से constant जदि हम प्रेशर इंक्रीज करूछु ताले कोन हबो से इक्विलिब्रियम को को डायरेक्शन को नै जिवो ना जो पटे लेसर नंबर ऑफ मोल्स अछंती सो एठी हम कंसीडर करिबो कोटा लेसर नंबर ऑफ मोल्स हैला सो इंक्रीज इन प्रेशर विल शिफ्ट द इक्विलिब्रियम टुवर्ड्स लेसर नंबर ऑफ मोल्स जदि डिक्रीज इन प्रेशर करिबा माने प्रेशर केते डिक्रीज करिवो इंक्रीज इन वॉल्यूम जदि वॉल्यूम हम बढ़ाई दोछु प्रेशर डिक्रीजेस ताले कोन करिवो ना जोटी ग्रेटर नंबर ऑफ मोल्स अछंती गैसियस मोल्स सेही पट को इक्विलिब्रियम शिफ्ट हे जिवो सो एठी हमें प्योरली ए दुटा जिंस माइंड रखिबा ताले कंट्रोल करिबा एबे छुआ इंक्रीज इन प्रेशर इंक्रीज इन प्रेशर माने कोन माने को छ स्ट्रिक्टली डिक्रीज इन वॉल्यूम सेटा तुमको माइंड रखिया पड़िबो increase in pressure shifts the equilibrium towards कोड करबो प्रेशर बढ़ी गले जो पटे कम संख्यक गैसियस मोल अछंती से पट को नै जिवो सो दैट द इक्विलिब्रियम इज रीएस्टैब्लिश्ड इन टुवर्ड्स लेसर नंबर of gaseous moles lesser number of moles बहुत बार लिखाई थी मैं तुमको आरी कन्फाइन कर दिले lesser number of gaseous moles बुक से लिखाई थी lesser number of moles हैला सेमती decrease in pressure यदि प्रेशर हम डिक्रीज करबा decrease in pressure means what increase in volume decrease in pressure will shift the equilibrium towards which direction प्रेशर कमेबो तेनु ग्रेटर नंबर ऑफ मोल्स को नै जिवो शिफ्ट्स द इक्विलिब्रियम शिफ्ट्स
the equilibrium, shifts the equilibrium towards greater number of gaseous moles. जो पटे gaseous mole संख्या बेसी अच्छी से पट को से shift करता हूँ. Okay, so you have to remember like this. Increase in pressure means decrease in volume will shift the equilibrium towards lesser number of gaseous mole. अब यदि decrease करूँ will shift the equilibrium towards greater number of gaseous mole. ताले छुआ एठी apply करिया वर्तमान. जदि हमें pressure increase करूँ कोड shift होगा ताले it will be shifted, the equilibrium will be shifted towards lesser number of gaseous moles. एठी reactant side केते moles अछन gaseous ना 4 moles, product केते अछि 2 moles, तार को पटे lesser अछि ना product side रे. So for greater yield of ammonia हम कोन करिया पड़िबो, we have to maintain a high pressure. हमको maintain करिया पड़िबो high pressure. काहे कि ना जेहेतु एपटे कम संख्यक मोल अछन gaseous moles, जदि हम pressure increase करछु equilibrium कोड shift हेजबो towards product side, बेसी ammonia production. यदि decrease कर दोछु pressure ताले कोन हबो, reverse direction में पळै जिवो. को पटे बेसी अछंती ना reactant side अछंती. So decrease in pressure will shift the equilibrium towards the reactant side. That means more reactants will be produced. So this is how you have to follow. It दुई प्रकार क्वेश्चन आसीबो, effect of change in pressure or change in volume. मन रखिबो, at a constant temperature volume and pressure are inversely proportional to each other. यदि pressure बढ़ौछु volume कमिबो, यदि pressure कमौछु volume बढ़िबो. Okay, you have to remember like this. Okay, this is the effect of change in pressure. So for greater yield of ammonia, what is required? Now we have to maintain a high pressure. तो प्रत्येक कंडीशन में देखो मैं हावर्स प्रोसेस डिस्कस करछि छुआ. So प्रत्येक कंडीशन में हावर्स प्रोसेस जेतु डिस्कस करछि, this will be my assignment for under which conditions there will be maximum yield of ammonia. कहि साछि हावर्स प्रोसेस र पर्पस होछि मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ammonia. ammonia को काम रे लागुछि ना ammonia लागुछि फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फर्टिलाइजर्स प्रोडक्शन पे यूज होछि. तेणु हमको जेते अधिका ammonia प्रोड्यूस हेई परिबो by applying Le Chatelier principle, it is more favorable. So which conditions of concentration, temperature and pressure are required for greater yield of ammonia? हैला. तो these are the main factors. अब non factors दुइटा रहबे छुआ मन रखिबो. non factors जो मानकर कोनसी इम्पैक्ट नाही on equilibrium. फर्स्ट होची addition of catalyst. catalyst निहाती दरकार काहे कि ना it will fasten the reaction, it will only fasten the reaction or it will hasten the equilibrium टा शीघ्र पहुंची जिवो, but catalyst ର कोनसी इफेक्ट नाही. एठी कहिछि finely divided iron will be used as the catalyst, so it only hastens माने hastens the approach of equilibrium टा शीघ्र पहुंचियो because it equally increases the rate of both forward as well as backward direction. 5 नंबर रे आउट पॉइंट सा मोस्टली पचरा जाय एडिशन ऑफ इनर्ट गैस. जेतरा हम इनर्ट गैस लाइक आर्गन हीलियम ऐड करूछु कोन होछि ना इट डज नॉट हैव एनी इंपैक्ट. काहे कि ना हम कहिछि मोस्टली वी आर फॉलोइंग द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट इन टर्म्स ऑफ पार्शियल प्रेशर. जे पर्यंत वॉल्यूम टा फिक्स्ड कांस्टेंट अछि, पार्शियल प्रेशर विल बी अनचेंज्ड. आ जेहेतु पार्शियल प्रेशर अनचेंज रहउछि, कंसंट्रेशन चेंज होबो नाही, दैट मींस देयर विल बी नो इंपैक्ट ऑफ एडिशन ऑफ इनर्ट गैस ऑन द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट और द वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम. ओके, नो इंपैक्ट. काहे कि एज द वॉल्यूम रिमेन्स कांस्टेंट. जेहेतु वॉल्यूम टा कांस्टेंट रहउछि ताहले पार्शियल प्रेशर अनचेंज रहउछि, से फल रे कोन होछि ना एडिशन ऑफ इनर्ट गैस जदि हम ऐड करूछु तार इक्विलिब्रियम पे कोनसी इफेक्ट रहइबो नाही. बट इफ वॉल्यूम इज वेरिएबल देन इट मे हैव सम इंपैक्ट बिकॉज़ इट मे इंक्रीज और डिक्रीज द प्रेशर. बट मोस्टली यू विल बी आस्क्ड रिगार्डिंग द इफेक्ट ऑफ एडिशन ऑफ इनर्ट गैस when the volume is kept constant. मन रखिबो these are the non factors. Non factors काहे कहली मु ना because they have absolutely no role, they do not disturb the equilibrium position at all. So माने equilibrium position कोन छडे impact करती नाही. So this is all about your Le Chatelier principle. Whenever a system in equilibrium is disturbed, is subjected to change in temperature, pressure or concentration,
then the system adjusts itself in such a manner that the effect of the change is minimized by nullified. That is Lee-Chatterley principle. So next student, I will give you some assignment. You have to solve it and send it to me. Okay. So next I will give you some assignments. Then next students, this is the time for assignment. Assignment कहती simple assignments देची. I have given you only simple assignments. So I am just discussing the questions and giving you some hints. किसी hints दोची accordingly you write down the answer and send it to my WhatsApp number. Question 1. I have already discussed these things. Applying Lee-Chatterley principle, write down the conditions required with respect to concentration of the reactant or product, temperature, pressure, and catalyst for maximum yield of ammonia in Haber's process. कही साची छुआ, we use the Lee-Chatterley principle to optimize the production of ammonia or the reversible reaction. हमको production optimize वा बढ़िया पे कौन करेगा पड़ेगा? We have to apply the Lee-Chatterley principle. So what are the conditions required for maximum yield of ammonia? Okay, maximum yield of ammonia पे को condition दरकार with respect to concentration of the reactant or product, then temperature and pressure. वही दीची डाटा दे दीची तुमको छुआ. Haber's process is exothermic in the forward direction. कहीं की ना del H is equal to minus 92 kilojoule per mole. So Haber's process is exothermic in the forward direction. Okay. So you write down the conditions. I have already discussed a lot regarding this. कहीं से अच्छी वीडियो को भलो कम देखिए बदी. If you go through the video sincerely, then you will get the answer. कहीं की ना Haber's process जो हमें लिखिबा N2 gas plus 3H2 gas gives rise to 2NH3 gas. एठी del H होची नेगेटिव. del H होची नेगेटिव. केते कहितली minus 92 किलोजूल पर मोल. तेणु खाली तुमको दरकार del H पॉजिटिव बा नेगेटिव. कहि साची del H negative means it is exothermic in the forward direction. So accordingly you write down what are the conditions required for maximum yield of ammonia. Next, what will be the effect of reducing volume? तुम कहि छी छुआ pressure direct पचारि परिबो नले volume पचारि परिबो. You have to remember the relationship between pressure and volume at a constant temperature. आमे कोन करिवा जदि volume reduce करिवा एई दुईटा रिएक्शन पर कोन इम्पैक्ट रहइबो. So what are the reactions? H2 plus I2 gives rise to 2HI. All are gaseous in nature. Then carbon plus oxygen gives you carbon monoxide. Here carbon is solid, oxygen gas, carbon monoxide is gas. कही साची details रे you have to write down what is the effect of reducing volume on the following reaction. In which direction the equilibrium will be shifted. माने कोन लिखिबो? In which direction the equilibrium will shift. That is the answer. Okay. Then third one, what will be the effect on equilibrium for the following reaction? 2N2O plus O2 gives rise to 4 nitric oxide, 4NO, where it is exothermic in the forward direction. Then endothermic in the forward direction. Del H is positive. It कौन दिया है तुमको? Del H is positive. That means in forward direction it is endothermic. Forward direction ये होची endothermic. काहे कि ना del H positive अछि. तेणु accordingly you decide when the volume of the vessel increases. यदि एक reaction ना volume टा हमें increase कर दोछु कौन होगा pressure को? Accordingly you write down the shift in equilibrium. Then when the temperature is decreased, temperature कमेले को direction में जीवो. काहे कि ना एठी दिया है already del H is positive means it is endothermic in the forward direction. Okay students, so these are the assignments. You have to solve them. If you have followed the Lee-Chatterley principle correctly, you can solve these things easily. आराम से solve कर पारो, no problem. Okay, so solve it and send it to my WhatsApp number. So students, this is for today. In the next class we will start ionic equilibrium. So see you in the next class. Till then, goodbye.